Hi, good morning, students. In my previous lecture on Muslim law, we had talked in detail about the application of Shariat to all the Muslims in India, whether they were converts or they were born as Muslims. The Shariat Act 1937 applied 10 matters to all Muslims, and 3 matters were left to their discretion, whether they want to follow Islam or they want to follow their customary law. We now take up the next matter in Muslim law, which is marriage. Marriage is one of the most important sociological institutions because marriage brings so many effects. It brings order to the society. It gives legitimacy to children. It prevents sexual anarchy. And it forms the very basis of a family. Marriage, of course, always has been the cornerstone of every religion. कोई भी religion आप ले लो, हिंदुइज्म ले लो, हिंदुइज्म में सैक्रमेंट है, 7 जन्मों का साथ है. Muslim law में we will just discuss, it is more of a contractual, we will see why. Parsis law में, Christians में, marriage always has the foremost part in any personal law. Marriage because is interlinked with so many things. In fact, अगर हम बोलें कि पर्सनल लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है तो वो मैरिज है, क्योंकि मैरिज के बाद सक्सेशन राइट्स, बच्चे होने, बच्चों की लेजिटिमेसी, बच्चों के राइट्स, मेंटेनेंस, रेस्टिट्यूशन, कुछ भी ले लो, उनका फाउंटेन हेड मैरिज होता है. दैट इज व्हाई वेदर इट इज रिलीजन, वेदर इट इज ज्यूरिस्ट्स और वेदर इट इज एनीबडी, everybody, and including secular law, everybody gives the right weightage which is required to any marriage. We have a marriage in each personal law, and we also have marriage in secular law. In each personal law, we have marriage as per that religion and personal law. Hindu marriage is absolutely different from Muslim marriage. And a Muslim marriage is absolutely different from a Christian marriage. And a Christian and Hindu and Muslim marriage is absolutely different from a Parsi marriage or a Jew marriage. When I say completely different, I'm not talking about only the rites and rituals. मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही. उनके इफेक्ट्स बड़े डिफरेंट है, उनके तरीके बड़े डिफरेंट है, उनका इथॉस डिफरेंट है. इट इज इन दिस कंटेक्स्ट दैट वी हैव टू रीड मैरिज इन मुस्लिम लॉ. मुस्लिम लॉ में भी मैरिज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है. Concept of marriage in Muslim law is to be seen in the context of history. History of Arabs. उस context में देखना है हमें. Arab law क्या था? एक बिखरा हुआ लॉ. Arabs कौन थे? Raiders and traders. It was not a civilization जो एक जगह टिक के, unlike Aryans जो इंडिया में एक जमीन पे एग्रीकल्चर करके एक पूरी फैमिली यूनिट की तरह रह रहे थे. इनकी जो सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री है अरब्स की, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. नेचुरली जब एक मूव कर रहा है, जो आज यहां है, कल ऊंटों पे पता नहीं सहारा डेजर्ट में किस जगह होंगे, अरेबिया में. सबसे बड़ा इस चीज का, किस चीज को हिट पड़ेगा इस चीज का? नेचुरली टू मैरिज.
अगर आप यहां हिंदू लॉ को ले लो, हिंदू लॉ में जमीन, आज भी हम अगर बात करें तो पृथ्वी मां का दर्जा दिया जाता है। रीजन क्या है कि उस पृथ्वी से ही सब कुछ था। उनका एग्रीकल्चर, उनकी सोसाइटी, उनके किंगडम्स, एवरीथिंग वॉज connected to land. In the Arab culture, nothing was connected to land. Because it रेतीला इलाका है, डेजर्ट है। एग्रीकल्चर हमेशा एक बाइंडिंग फोर्स होता है, यहां नहीं था। और नेचुरली जब बाइंडिंग फोर्स नहीं है और वो रेडर एंड ट्रेडर हैं, आज यहां कल वहां, तो सबसे ज्यादा सफर क्या करता है? फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन। किसका बोलबाला होता है? मेल्स का। दैट इज अ रीजन, अ इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ मेल डोमिनेंस इन कस्टमरी अरब लॉ। नेचुरली जब उस हालात में थे लोग, तो कहीं भी जाते थे वहां पे शादी कर लेते थे, जिसको निकाह कहते हैं। कभी भी शादी कर लेते थे, कभी भी छोड़ देते थे। They could marry any number of times, divorce any number of times, remarry the woman again. यानी कि सबसे ज्यादा जो अगर हम बोलें कि प्लाइट खराब थी तो वो विमेन की थी। Women basically had no role to play at all, except being chattels. It is at this juncture that Islam comes in. एक बहुत ज्यादा जो लोग इस्लाम को नहीं जानते और जो सीधा एक अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, इस्लाम में मुस्लिम है 4 बीवियां तो रख सकता है। सो मेनी एस्पेक्ट्स, इतना डेरोगेटरी बात करते हैं। एक चीज हम नहीं जानते, इसलिए बात करते हैं कि किस टाइम पे इस्लाम आया था। At a time when women were nothing but herds of cattle and women were the same. A man could marry at will, divorce at will, remarry at will, marry as many number of times. उस हालात में ये लॉ देना मैरिज का एंड डाइवोर्स का, ये एक आई विल से वो द ह्यूज अचीवमेंट ऑन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। हमें कभी भी कोई चीज देखनी है, उसको उसके सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में देखना है, और उस सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में जो किया, इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। पहली बार एटलीस्ट इन मैरिज एक इक्वल स्टेटस दिया जाता है आदमी को और औरत को। पहली बार औरत की रजामंदी बिकम्स इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दैट, औरत को एक थैंक्स गिविंग के रूप में एक मेहर, डॉवर भी दिया जाएगा। The secular aspect prevailed in Islam, in the sense that there had to be a proposal from the man. That proposal had to be accepted. If the wife to be rejected the proposal, that would be the end, no marriage. Plus the husband had to
give a dower. No dower, again no marriage. इंटीग्रल चीजें हो गई हैं. एक प्रपोजल होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक कंसिडरेशन होना चाहिए. If I'm allowed to use these terms, though I would also like to hasten to say that there is again a lot of controversy on these matters. मैरिज में अगर हम देखें तो औरत का पलड़ा भारी है. वो रिफ्यूज कर सकती है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उसके साथ, अनलाइक अरब लॉ जहां जबरदस्ती की जा सकती थी. इट इज ओनली इन डाइवोर्स कि आदमी का पलड़ा भारी है. तो अगर हम दोनों को अलग लें, मैरिज को लें और डाइवोर्स को लें, मैरिज में डेफिनेटली औरत का पलड़ा भारी है, पर अगर आप डाइवोर्स में आते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि आदमी का पलड़ा भारी है. Naturally, the first question which arises is, और ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है, is marriage in Muslim law a sacrament or is it a contract? Sacrament क्या होता है? What do we mean when I say is marriage a sacrament? It means marriages are made in heaven. They are as per the will of God. इसीलिए सैक्रामेंट जहां होता है वहां पे बेसिकली एक लाइन होती है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन. क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, मैरिजेस आर मेड इन हेवन. हिंदू लॉ में आ जाओ, मैरिजेस आर मेड इन हेवन. इसीलिए जब हेवन भगवान आपकी शादी करा रहा है और क्रिश्चियनिटी में अगेन गॉड इज मेकिंग योर कनेक्शंस, देन हु आर यू टू डिसॉल्व इट इन दिस वर्ल्ड. यही कारण था कि हिंदू लॉ में कोई डाइवोर्स का कंसेप्ट नहीं था, ना कोई डाइवोर्स का कंसेप्ट, ना ही कोई एनलमेंट ऑफ मैरिज का कंसेप्ट, एंड ना ही रीमैरिज का कंसेप्ट. विडो रीमैरिज तभी तो नहीं थी. अगर इस एंगल से देखें हम तो पहला पॉइंट ये है कि मुस्लिम मैरिज यानी कि निकाह, देयर इज ओनली बेसिकली वन टाइप ऑफ मैरिज कॉल्ड निकाह. निकाह इज not a sacrament. So now naturally the $1,000,000 question arises, is it a contract? But then if it is a contract, then do we take it as a pure contract under the terms of Indian Contract Act 1872? There is a proposal, there's a acceptance, there's a consideration. This is the question which has to be now thrashed out. Because when I say it's a pure contract, it takes away all divinity. Marriage just becomes an ordinary thing, or like a contract. Then if it's a contract, can it be rescinded? क्या हम उसको एक इतने लो लेवल पे ले जाएं कि वो तो जी एक मियर कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही चलेगा? दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर. सो लेट्स सी व्हाट हैज बीन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस, एंड आई वुड लाइक यू ऑल, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मेंस. ये बहुत बार आता भी है. सो लेट्स राइट दिस आंसर. इज निकाह और मुस्लिम मैरिज a contract or a sacrament? दो क्लियर व्यूज हैं इस पे. एक व्यू है कि इट इज प्योर कॉन्ट्रैक्ट
और एक व्यू है कि नहीं, इट इज सैक्रामेंट. So let's start writing and then we will come to a conclusion whether it is a contract or a sacrament. There is a divergence of opinions regarding the concept of Muslim marriage. One school of thought says that it is purely a contract, while the other group hastens to say that it is not a mere contract but also sacramental. I would like to quote firstly the straightway full bench judgment of Allahabad. Abdul Qadir versus Salima. Abdul Qadir, Kadir, Qadir versus Salima, Salima, 1886, Allahabad full bench. In this, the words of Justice Mahmood are quoted everywhere because this is a judicial precedent and this is a judicial ruling on this. So judicially speaking, in the words of Justice Mahmood, and I quote, Muslim marriage is a civil contract on completion of which, by proposal and acceptance, all the rights and obligations which it creates arise immediately and simultaneously. Now, since this is a judicial pronouncement, we can start with this. If I was to quote Wilson, Wilson says that Muslim marriage is a contract for the purpose of legalizing sexual intercourse and procreation of children. In his book Anglo-Mohammedan Law, Sir Wilson says this. Dr. Jung, Jung, Dr. Jung says, marriage, though essentially a contract, is also a devotional act. So now we have the other view coming up. You know, there are two parts of any aspect of Muslim law. या कोई भी अगर ऐसी चीज लेते हैं, दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है मुआमलात, कहते हैं ना मामलात, उस मामलात में. सो मुआमलात, MUAMLAT, मुआमलात, MUAMLAT, मुआमलात. मुआमलात मीन्स रोजमर्रा की चीजें. सो एक एस्पेक्ट होता है मुआमलात और एक एस्पेक्ट होता है इबादत. इबादत, IBADAT. अगर हम कहें कि ये मुस्लिम मैरिज प्योरली एक कॉन्ट्रैक्ट है तो हम कहेंगे ये मुआमलात में है, टोटल मुआमलात में आती है. यानी कि एवरीडे मंडेन मैटर्स, नॉट कनेक्टेड विद गॉड. इबादत ऑलवेज इज कनेक्टेड विद गॉड. अगर मैं कहूं ये इबादत है सिर्फ, तो इसका मतलब है ये सैक्रमेंट हो गया. All the Muslim jurists are unanimous on one aspect, that it is neither muamalat nor ibadat. It is a golden combination of both. Before I go to this, एक बड़ी बेसिक चीज हमें पहले
प्रॉफेट मोहम्मद के सुन्ना में जाना पड़ेगा। प्रॉफेट मोहम्मद के सुन्ना में प्रॉफेट ने खुद कहा है, he has this is called सुन्नत मुवाक्दिया। ये लिखने की जरूरत नहीं है। सुन्नत मुवाक्दिया मीन्स द एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट आर टू बी फॉलोड बाय द मुस्लिम्स। सुन्नत जो है प्रॉफिट की, वो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है सबके लिए। ऑल ऑफ यू मस्ट फॉलो दिस। नाउ द प्रॉफिट हिमसेल्फ हैज सेड, nikah is my sunnat, and one who dislikes my sunnat is not mine. हर मुसलमान को निकाह करना जरूरी है। I repeat these very important words of the Prophet. Nikah is my sunnat, and one who dislikes my sunnat is not mine. मेरा सुन्ना, मेरा बिहेवियर सारे मुसलमानों के लिए है, और अगर कोई मेरे सुन्ना को फॉलो नहीं करता तो वो मेरा नहीं है। और अब निकाह इज माई सुन्नत। तो जैसे ही निकाह इज माई सुन्नत, ऑटोमेटिकली डिविनिटी गेट्स अटैच्ड। तो ये कहना कि तो जी ये प्योर मुआमलात है, ये प्योर कॉन्ट्रैक्ट है, गलत है। इस चीज को माय फेवरेट जस्टिस कृष्णा आयर ने भी बोला। जस्टिस कृष्णा आयर, in his paper, he wrote a very important paper on this, reforms of Muslim personal law. And in this paper, he wrote the impression that a Muslim marriage is a mere contract and hence not sufficiently solemn or sacred is another fallacy of the Hindu and Western thought. I would definitely go with this line. I repeat this, please quote it when it comes in your exams. ये चीज लिखनी है. The impression that a Muslim marriage is a mere contract and not therefore sufficiently solemn or sacred is another fallacy. Fallacy. Fallacy means mistake of the Hindu and Western thought. If I go to Tahir Mahmood, Tahir, second word Mahmood, Mahmood. In this, another important jurist of Muslim law, he says, marriage in Islam is not merely a civil contract devoid of all religious and spiritual values. It is a combination of secular aspects, muamalat, M-U-A-M-A-L-A-T, muamalat, but it also partakes the elements of a sacred union of two souls for spiritual ends, iddat, I-B-A-D-A-T. So marriage in Islam is a combination of muamalat and ibadat. We have another Allahabad later, पहला वाला जस्टिस महमूद का मैंने बताया था, फुल बेंच का था। एक और इलाहाबाद में बाद में आता है 1933 में, वो वाला तो बहुत पुराना था, वो तो 1886 का था। एक और इलाहाबाद का केस आता है हमारे पास, अनीस बेगम, अनीस ANIS, अनीस बेगम वर्सेस मोहम्मद इस्तफा, ISTAFA, 1933, Allahabad. In this, the Chief Justice of Allahabad High Court expressed his view that marriage is not a pure civil contract but should be treated as a religious sacrament in Islamic jurisprudence. What about the later laws? ये तो हो गए पुराने laws.
I would like to also quote certain later laws. Andhra Pradesh High Court gave a very detailed and a very correct definition in my own humble opinion. The matter came up in Sheikh Apsar, S-H-A-I-K, Sheikh Apsar, A-P-S-A-R, versus State of Andhra Pradesh, 2004, Andhra Pradesh High Court. In this, it was held, marriage under a Muslim law partakes the nature of both a sacrament and a civil contract. It is a holy injunction. It has a position midway between muamalat and ibadat. अगर मैं लेटर केसेस में, अभी रिसेंट केसेस में आऊं, मेरे पास एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है. दिल्ली हाई कोर्ट इन रईसुद्दीन, RAISUDDIN, रईसुद्दीन वर्सेस गुलशन, 2016, Delhi High Court. I would like to quote this judgment. Nikah amongst Muslims is in the nature of a contract or solemn pact, solemn, S-O-L-E-M-N, solemn pact between persons of two opposite sexes, making it a lawful contract after soliciting each other's consent for company. The votaries of the theory of marriage who say that it is more than a mere civil contract base their opinion on the fact that the Prophet declared nikah as his own sunnat. We can safely say that it is only the form को underline कर लो. It is only the form of Muslim marriage which is contractual and non-ceremonial, क्योंकि ceremonies नहीं है. It is only the form of Muslim marriage which is contractual and non-ceremonial. But as far as a concept, now underline concept, but as far as a concept of marriage is concerned, it is something more than a contract. So ये बहुत ब्यूटीफुल लाइन आ गई हमारे पास कि फॉर्म जो है मुस्लिम मैरिज का वो कॉन्ट्रैक्चुअल एंड नॉन सेरेमोनियल है, बट जो इसका कंसेप्ट है वो सैक्रमेंटल है, वो सुन्नत से जुड़ा हुआ है, तो वो इबादत है. So now I hope everybody has written in detail the entire aspect. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 10 नंबर का बहुत बार आता है. Again I am expecting in the coming exams I have given you all the possible jurists के और जो हमारे पास जितने भी decisions आए हैं कोर्ट्स के वो I have shared with you. I hope सबने लिख लिया है. ये पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2.5 पेज का होना चाहिए. Whether Muslim marriage is a sacrament or a pure contract. I hope now everybody is clear on this. Now, once we are clear with this, the next question which arises is, the next aspect which we are going to take up is now the general nature. Firstly, we must understand the Arabic society. It was the Arabic society on which Islam was being superimposed. Arabic society before Islam came was erratic, was haphazard,
there was no semblance of order, there was sexual anarchy. In other words, there was complete pandemonium as far as personal law was concerned. To impose restraints upon such a society was not an easy task. To bring order, especially social order, by bringing in more and more, what we will say, constraints, was a very difficult task. And we must give proper respect to the Prophet and Islam, that it now was able to control what I call anarchy in personal law. It is not ideal even today. Somewhere there are many flashes of inequality, no doubt. But then, as I said, the Prophet could not revolutionize the whole society with a magic wand कि एक जादुई डंडा घुमाया और सब चेंज हो गया. He had to get it accepted. He had to get acceptance. If he had gone overboard, कोई भी उनकी बात ना मानता. उनको उसी सोसाइटी को चेंज करना था, ठीक करना था. इसीलिए जो कंसेप्ट्स हमारे पास हैं, जो आज के दिन में हम टुडेज डे वी फाइंड इट इनकॉन्ग्रुअस, वी फाइंड इट एब्सोल्युटली इनकॉन्ग्रुअस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बट उन दिनों में इट वॉज अ ह्यूज रिवोल्ट. This aspect one must never forget while discussing Muslim marriage. उनमें से जो एक चीज आज भी है वो है पॉलीगैमी. मैरिज की जब मैं बात करता हूं तो पॉलीगैमी का सबसे पहले पॉइंट आता है. हिंदू में पॉलीगैमी थी. हिंदू लॉ में पॉलीगैमी भी थी और पॉलीएंड्री भी थी. जब हम अपने एपिक्स में जाते हैं, रामायणा में पॉलीगैमी है, महाभारता में पॉलीएंड्री है. एंड देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन. यहां पे इस्लाम में तो फिर भी अभी रिस्ट्रिक्शन हम पढ़ने वाले हैं. 1 2 3 4 प्रॉफिट ने कहा था, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. अ मैन कुड मैरी 100 वाइफ्स और अ वुमन कुड मैरी 100 हस्बैंड्स. हिंदुइज्म में ये तो कोडिफाइड हिंदू लॉ ने 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट ने कम कर दिया कि नहीं, एक से ज्यादा करेंगे तो ऑफेंस है, बिगेमी मानी जाएगी. क्रिश्चियनिटी में शुरू से ही एक था, 1 वाइफ 1 हस्बैंड. पारसीज ऑल्सो हैड 1 वाइफ 1 हस्बैंड कंसेप्ट. यहां पे 4 वाइफ्स का कंसेप्ट आया कैसे? I told you the existing Arab culture was that you could keep as many wives, you could divorce them at will, you could remarry at will, whatever. The Prophet was not at all happy with this. आगे जब हम डाइवोर्स हम टॉपिक पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ में, तो प्रॉफिट ने कहा था कि सबसे ज्यादा अगर कोई डिटेस्टेबल चीज है दुनिया में तो वो डाइवोर्स है. Of all detestable things known to man, the worst is divorce. Very clearly, ayat says this. एक बार क्वेश्चन उठा कुरान के आयात चैप्टर 4 के आयात 129 में लिखा, in this chapter 4 आयात आर कपलेट्स. मैंने बताया था पहले आपको.
On ayat number 129, Prophet was very unhappy. I'm telling you, he did not like polygamy. तो उन्होंने कहा कि अब अगर आपको एक से ज्यादा वाइफ रखनी है तो हर वाइफ को इक्विटेबली ट्रीट करना पड़ेगा. ईच वाइफ मस्ट बी ट्रीटेड इक्विटेबली, और अगर आप इक्विटेबली उनको ट्रीट नहीं कर रहे हो तो मेरे सुन्ना के खिलाफ है. और अगर हम बाद में आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939, तो दिस ऑल्सो बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स फॉर अ वुमन. पर उस टाइम की हम बात कर रहे हैं. तो इसी आयत में उन्होंने कहा, एक्चुअली वो क्या कह रहे थे कि अगर आप एक से ज्यादा वाइफ रखना चाहते हो तो हर वाइफ को बराबर का दर्जा दोगे, बराबर की देखभाल करोगे. यू विल ट्रीट देम इक्विटेबली. बट देन ही सेड दैट you have to, if you keep more than one wife, you have to treat them equitably whether they are 1, 2, 3 or 4. अब चाहे वो 1, 2, 3 या 4 हों. अब अगर हम इस आयत को ऐसे ही पढ़ते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने 4 बीवियां रखनी है या 4 वाइफ्स रखनी है. Nowhere does it lay down that it is mandatory to have. It is merely being permissive in nature. So please remember, polygamy basically came up as the only via media to control an otherwise sexually anarchist Arab law. And nowhere is it ordained in the Holy Quran that a Muslim has to marry 4 women. In fact, a restraint is being put up by ayat 129 of chapter 4 of the Holy Quran, where the Prophet very categorically says that in case you marry more than once, then all your wives must be treated equitably, even if they are 1, 2, 3 or 4. This reference to 1, 2, 3 और 4 was not made in the context कि 4 wives रखनी ही हैं. इस context में था कि चाहे 1, 2, 3, 4 हों, उनको आपको सही तरीके से रखना है, बराबर का दर्जा देना है. इस एंगल से बोला गया था. I hope I'm clear on this very, very important aspect. You know, the Prophet was always in favor of monogamy. He never wanted polygamy. ये जो उन्होंने वर्ड्स बताया है ये बिल्कुल परमिसिव नेचर का, एंड इट डज नॉट शो एनीवेयर दैट द प्रॉफिट वाज फेवरिंग पॉलीगेमी. बट हालात ऐसे थे कि अगर वो उस टाइम कह देते कि मोनोगेमी, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट ने कह दिया 1955 में, अगर वो उस टाइम कह देते कि नो अरब कैन मैरी मोर देन वंस, तो रिवोल्ट हो जाता, शायद कोई उनकी बात ना मानता. द प्रॉफिट वाज अ सजेशियस पर्सन. ही न्यू कि कितनी दूर तक कितना मैं दबा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दबाते तो शायद वहां के लोग उस टाइम उनको ना मानते. नाउ once we clear with this aspect of polygamy, the why of polygamy, अब इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है polygamy में. polygamy के पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. पॉजिटिव बस इतने हैं कि चलो he has 4 wives and now he can produce children from each of them. So now naturally out of marriage concept खत्म हो गया. इसीलिए प्लीज रिमेंबर, मुस्लिम लॉ एक ऐसा लॉ है जहां किसी भी हालत में एडल्ट्री टॉलरेट नहीं होगी. Adultery is not only a sin, it is also punishable with stoning to death. इतनी strong है. Zina, Z-I-N-A, zina. This is the reason why the Prophet refused to tolerate adultery at all, and in fact
दिस इज वन ऑफ द पनिशमेंट्स गिवन इन द होली कुरान कि अगर कोई जिना करता है, चाहे आदमी हो, ये नहीं कि औरत हो, आदमी भी, तो फिर उसको पत्थर मार के मार दिया जाए। सो प्लीज रिमेंबर, हमें गलत कई बार कोई लोगों को दिमाग में गलत कंसेप्ट है कि पॉलीगेमी का मतलब है बड़ी परमिसिव सोसाइटी है, कुछ भी कर लो, 4 बीवियां रख लो वगैरह। नो, उल्टा है। दे आर अ वेरी स्ट्रिक्ट सोसाइटी। नेगेटिव एस्पेक्ट ये हो गया कि वुमेन केम एट अ रिसीविंग एंड। कौन वुमेन लाइक करेगी कि उसकी 3 और सौतने हो, नेचुरली। सो एज अ रिजल्ट द प्रॉफिट हैड टू से दीज थिंग्स कि रखनी है, अगर एक से ज्यादा वाइफ करनी, मैरिज करनी, कर लो, बट देन बराबर रखोगे सबको, नहीं तो फिर ये सिन है। ब्रिटिश ने तो लॉ ही बना दिया 1939 में, इसको ग्राउंड ऑफ डिवोर्स दे दिया कि जहां एक मुस्लिम हस्बैंड सब वाइफ को इक्विटेबली नहीं देखता है, तो चलो जी डिवोर्स का ये एक ग्राउंड हम लड़की को, औरत को दे रहे हैं। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पॉलीगेमी इन इस्लाम। Now that we are clear about this, the next question which arises is, how many kinds of marriage are there? What are the ceremonies? What is the particular form of marriage? Is it something like what we have in Hindu law? Or the role of the church in Christian law? The answer is no. Basically, there is just one type of marriage called nikah. There is no term fixed in nikah. It's a permanent thing like any other marriage. There are no religious ceremonies, though in 1 or 2 sub-schools, some words of the Prophet have to be repeated, खासकर जो उन्होंने सुन्ना में बोला हुआ है। इसमें सिंपल है, लड़का प्रपोजल करता है, लड़की एक्सेप्ट करती है, मेहर डिसाइड होता है, शी सेज यस एंड दैट्स इट, हो गई। सुन्नीज में 2 विटनेसेस की भी जरूरत है, शियाज में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं भी है विटनेस तो बाद में आ जाएंगे, रेटिफाई कर देंगे। एक कमरे में एक लड़का प्रपोजल कर सकता है, लड़की एक्सेप्ट कर सकती है, डावर डिसाइड हो सकता है, मैरिज हो गई, निकाह हो गया। बाद में आप 2 विटनेसेस को बुला के रेटिफाई कर सकते हो, वहीं उस टाइम कर लो तो बहुत ही अच्छा है। टेक्निकली स्पीकिंग इट इज अ वैलिड मैरिज। और अगर आप शिया हो तो फिर तो 2 विटनेसेस की भी जरूरत नहीं है। इतना सिंपल है मैरिज, क्योंकि इसका फॉर्म, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, फॉर्म इतना सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, तो लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट ही मान लेते हैं, इसके इथॉस को भूल जाते हैं। इट इज अ परमानेंट यूनियन। और जो भी एक शादी में हिंदू लॉ में मिलता है या क्रिश्चियन मैरिज में होता है, वही सारी चीजें तो यहां भी हैं, सेम इफेक्ट्स हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट्स? एक बार इफेक्ट्स देखते हैं। लेट्स सी द इफेक्ट्स। अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो वाइफ को क्या क्या राइट्स मिलते हैं? पहला राइट डावर का, मेहर। दूसरा मेंटेनेंस का। तीसरा सूटेबल मैट्रिमोनियल रेजिडेंस। चौथा इक्वल अफेक्शन, इक्वल मेंटेनेबिलिटी, इक्विटेबल ट्रीटमेंट अगर एक से ज्यादा वाइफ्स हैं। अगला राइट टू सोसाइटी, एंड देन राइट टू ब्रिंग अप द चिल्ड्रन, इवन अगर डाइवोर्स हो जाए तब भी। ऑब्लिगेशंस क्या है? ऑब्लिगेशंस में सबसे पहला पॉइंट है कि अ वाइफ विल रिमेन फेथफुल टू हर हस्बैंड
इसीलिए हम बाद में देखेंगे कि अगर कोई वाइफ किसी और से निकाह कर लेती है तो वो वॉइड मैरिज रहेगी। इस्लाम कभी उसको हाँ नहीं करेगा। तो शी हैज टू रिमेन फेथफुल एंड ओबीडियंट। शी विल, if her health permits, allow her husband for sexual union with her. She will suckle her children. दूध पिलाएगी अपने बच्चों को. And when there is a breakup of marriage, whether through divorce or through death of the husband, then she will follow iddat, IDDAT, iddat. यहां से हमारा दूसरा क्वेश्चन उठता है, what is iddat? IDDAT, also called idda, IDDA. You know what is the background of iddat? मैं आपको डिक्टेट करा दूंगा, पहले समझ लो। जब भी कभी मुस्लिम मैरिज डिसॉल्व होती है, बाई चांस वुमन प्रेग्नेंट हो, तो कल को पैटर्निटी का इशू आएगा। सपोज लड़की इमीडिएटली शादी कर लेती है, उस टाइम पे डीएनए वगैरह थोड़ा ना होता था, तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ ह्यूज इशू ऑफ हु इज द एक्चुअल फादर। फादरहुड का प्रॉब्लम आने वाला था। इसीलिए करीबन 3 महीने का टाइम हम देते हैं, ताकि अगर लड़की प्रेग्नेंट हो तो पता चल जाए। इस 3 महीने के दौरान शी कैनॉट मैरी। She is now supposed to follow iddat. Iddat basically means seclusion, अलग होना, अलग रहना, sexual abstinence रखना, naturally तभी पता चलेगा। So basically the concept of iddat was framed to ensure that there is no confusion of paternity in divorced wives or widows. Let's quickly write down the concept of iddat. When I go to the concept of iddat, how do I define? Let's quickly write down. Iddat is a period of chastity which a Muslim woman is bound to observe after the dissolution of her marriage, by death of her husband, or by divorce before she can lawfully marry again. This period of continence, continence, is imposed on the woman on the termination of her marriage in order to determine paternity, in order to ensure that there is no confusion of paternity, just in case she is pregnant at the time of dissolution of marriage. This abstinence is imposed on her to ascertain whether she is pregnant by her husband from whom the marriage has been dissolved, so that later on there is no confusion of parentage.
It's only after the completion of iddat that the new marriage can be taken as lawful. So basically the object of iddat is to impose a restraint on the wife whose marriage has been dissolved to marry before a certain period of time is over. Muslim law very clearly ordains that one should not marry a woman who is undergoing iddat. This restraint is not only on the woman, it is also on the man. Even the husband cannot remarry when the woman is undergoing iddat. However, if a marriage is performed during iddat, then in the Sunnis, it is not a void marriage, but it is an irregular marriage which can be set right by determining the paternity. However, in Shia law, any marriage which is conducted during the period of iddat is a void marriage. So there is a basic difference of concept of iddat between the Sunnis and Shias, of marriage during iddat between the Shias and Sunnis. In Sunnis, marriage during iddat is a void marriage. In Sunnis, it is a irregular marriage which can be set right. I think I've run out of time. I'll take it up from here in my next lecture, the types of iddah. We'll take it up from here. Thank you. God bless.